हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज सब्जेक्ट अच्छे पेडागोजी एवं पेडागोजी टॉपिक रही असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो या पर मुझे नहीं 50 MCQ विथ आंसर सहित जहाँ बहुत इंपोर्टाट अटे आम समस्त टीचरशिप एग्जाम आप क्वेश्चन आसूची। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज प्राइमरली यूज्ड टू। आमर जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग अच्छे के व्यवहार कराए। आंसर सी समराइज एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तलिखित केउंटी अटे असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो एग्जांपल अटे। तो आंसर बी फाइनल एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 3 द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज टू। आमर असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो मुख्य उद्देश्य कौन अटे। आंसर बी इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन फाइनल ग्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी व्हिच असेसमेंट मेथड इज बेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग ओवरऑल स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ ए कोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन पढ़ुची व्हिच असेसमेंट मेथड इज बेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग ओवरऑल स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ ए कोर्स। आंसर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन में मुझे स्टॉप रखुच्छी निजक। जदि तुम मैंने चैनल नुआ अच्छ तेज चैनल टी सब्सक्राइब करनी और भिडियो टी प्रथम थर देखुच भिडियो को लाइक करनी और लिंक टी तुम सांग सहित चाहिए तुम सेयार कर। हाँ जदि यार पीडीएफ तुम पाइबा चाहो तो मोर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल मो एग्जाम स्टडी जॉइन कले तुम यार पीडीएफ पाइब ए भिडियोर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तापर आसची an end of term project is an example of। an end of term project is an example of कहार example होते आंसर सी assessment of learning। तापर क्वेश्चन नंबर 6 आसची assessment for learning is primarily used to। आमर assessment for learning पे केउथि पे व्यवहार करा जाय। आंसर बी provide feedback to improve learning and guide future instruction। assessment for learning टी यूज करा जाय केउथि पे provide feedback to improve learning and guide future instruction। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तलित केउंटी अटे असेसमेंट फॉर लर्निंग रो एग्जांपल अटे। आंसर सी क्लास पार्टिसिपेशन एंड डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 8 द की पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज। आमर असेसमेंट फॉर लर्निंग रो की पर्पज कोन अटे। आंसर बी डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। असेसमेंट फॉर लर्निंग रो की पर्पज है डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच असेसमेंट अप्रोच हेल्प टीचर्स मॉडिफाई देयर इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स ऑनगोइंग परफॉर्मेंस। क्यों असेसमेंट टीचर्स को हेल्प करे तार इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करने स्टूडेंट मानकर परफॉर्मेंस रे भल होगापी। आंसर सी असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10 frequent quizzes and in class activities are example of। क्वेश्चन नंबर 10 frequent quiz and in class activities are example of। एक कहार एग्जांपल अटे हमरो frequent quiz and in class activities रे आंसर है assessment for learning। क्वेश्चन नंबर 11 assessment as learning involves students। असेसमेंट आज लर्निंग टी स्टूडेंट मान सहित कौन पे इन्वॉल्व अटे। आंसर बी यूजिंग असेसमेंट इनफॉरमेशन टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। असेसमेंट आज लर्निंग टी स्टूडेंट मान सहित इन्वॉल्व थे केउं दिगरे। आंसर बी यूजिंग असेसमेंट इनफॉरमेशन टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्स असेसमेंट आज लर्निंग। तलिखित केउंटी अटे असेसमेंट आज लर्निंग रो बेस्ट डिस्क्रिप्शन अटे। आंसर बी assessment that encourage students to use feedback to understand their learning process। क्वेश्चन नंबर 12 again पढ़ुची which of the following best describes assessment as learning। तलिखित केउंटी अटे असेसमेंट as learning रो बेस्ट डिस्क्राइब अटे। आंसर बी assessment that encourage students to use feedback to understand their learning progress। क्वेश्चन नंबर 13 an example of assessment as learning is। तलिखित केउंटी अटे असेसमेंट as learning रो एग्जांपल अटे। आंसर बी students reflect on their own work and setting goals for improvement। स्टूडेंट तार निजर वर्क मध्यम निजर लक्ष्य मध्यम निजर पाखे ज्ञानटी को इम्प्रूवमेंट किपरि करिबा असेसमेंट आज लर्निंग रो या एग्जांपल अटे। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच स्ट्रैटेजी बेस्ट सपोर्ट्स असेसमेंट आज लर्निंग। क्यों स्ट्रैटेजी असेसमेंट आज लर्निंग को सपोर्ट करे। आंसर बी यूजिंग सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक्स फॉर गोल सेटिंग एंड रिफ्लेक्शन।
Question number 15. How can students use assessment as learning to improve their performance? किपर स्टूडेंट यूज कर assessment as learning तार परफॉर्मेंस इंप्रूव आने आंसर है बी बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन फीडबैक एंड सेटिंग पर्सनल लर्निंग गोल माध्यम बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन फीडबैक एंड सेटिंग पर्सनल लर्निंग गोल माध्यम स्टूडेंट कौन कर तार असेसमेंट एज लर्निंग माध्यम निजर परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? तो अलग केउट गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक अटे ना आंसर सी इवैल्यूएट क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ ए यूनिट। Question number 17. Which of the assessment is most likely to involve a review of a student's progress over time? Question number 17 again पढ़ुची. Which type of assessment is most likely to involve a review of a student's progress over time? Answer है formative assessment. Question number 18. The main focus of a diagnostic assessment is to. Diagnostic assessment रो main focus कौन अटे? Answer है C. Identify students' strengths and weakness before instruction begins. आमर किसी इंस्ट्रक्शन आरंभ होगा पूर्व स्टूडेंट्स जो स्ट्रेंथ्स एवं वीकनेस कौन अच्छी ताको निर्णय करते कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट अलाउ स्टूडेंट्स टू ट्रैक देयर ओन लर्निंग प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट? केउ असेसमेंट माध्यम स्टूडेंट निज निज को ट्रैक कर परिबो तार लर्निंग प्रोग्रेस एवं एडजस्टमेंट कर परिबो ताको आंसर है असेसमेंट एज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20. व्हिच असेसमेंट टाइप इज यूज्ड टू प्राइमरीली टू गाइड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग? क्यों प्रकार असेसमेंट यूज साहाय्य करते प्राइमरी लक्ष्य अटे टू गाइड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग? आंसर बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग? असेसमेंट एज लर्निंग तलित क्यों की बेनिफिट अटे? आंसर बी एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। निज लर्निंग स्टूडेंट्स किपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो पारुछि ता असेसमेंट एज लर्निंग बेनिफिट अटे। क्वेश्चन नंबर 22. Which type of assessment provides insight into both the learning process and learning outcomes? क्यों प्रकार असेसमेंट माध्यम क्यों प्रकार असेसमेंट जोगा दी थाई आमर कोन बोथ लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग आउटकम्स? आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 23. Which assessment type helps in determining what students already know before new instruction begins? क्यों असेसमेंट माध्यम आम जापर स्टूडेंट कौन जानी गोटे नुआ इंस्ट्रक्शन आरंभ होगा पूर्व विषय आंसर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 24. असेसमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड? जो पढ़ा समय जो असेसमेंट यूज कराए लर्निंग टाक इम्प्रूवमेंट करने कौन कहुए फीडबैक नापी कौन कहुए? आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। Question number 25. Which type of assessment is most concerned with students understanding their own learning needs and purpose? क्यों प्रकार असेसमेंट जड़ित अटे आम स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग देयर ओन लर्निंग नीड्स एंड पर्पजेस प्रोग्रेस? आंसर है डी असेसमेंट एज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 26. सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन आर की कंपोनेंट्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट? क्यों असेसमेंट रो सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन आर की कंपोनेंट अटे? आंसर है असेसमेंट एज लर्निंग। Question number 27. Which assessment type is typically used to evaluate student learning after an instructional period? गोटे इंस्ट्रक्शनल पीरियड पर क्यों प्रकार असेसमेंट यूज कराए स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने लर्निंग आंसर है समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 28. Which approach is best for providing ongoing information to help student improve their learning? क्यों प्रकार असेसमेंट आमर यूज कराए अप्रोच कराए जहाँ स्टूडेंट मान हेल्प करे इम्प्रूव देयर लर्निंग? आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। Question number 29. Which type of assessment helps students to evaluate their own work and set personal learning goals? Question number 29 again पढ़ी. Which type of assessment helps students to evaluate their own work and set personal learning goals? Answer है assessment as learning. Question number 30. Which assessment method involves analyzing student performance and providing feedback to guide future learning? क्यों प्रकार असेसमेंट मेथड एनालाइज करे स्टूडेंट मान परफॉर्मेंस को एवं जगह फीडबैक दिए फ्यूचर गाइडेंस लर्निंग रे? आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 31. असेसमेंट फॉर लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट? असेसमेंट फॉर लर्निंग टी केतेबेले इफेक्टिव हुए जेतेबेले? आंसर है सी प्रोवाइड्स फीडबैक टू गाइड एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। आंसर है सी असेसमेंट फॉर लर्निंग टी केतेबेले इफेक्टिव हुए? आंसर है सी प्रोवाइड फीडबैक टू गाइड एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। Question number 32. A teacher use exit ticket to
gauge understanding at the end of a lesson. This is an example of. Question number 32 again पढ़ुची. A teacher uses exit tickets to gauge understanding at the end of a lesson. This is an example of formative assessment. Question number 33. Which of the following best describe the role of assessment as learning in a classroom? तलिखित केउंटे assessment as learning रो best description अटे in class रे. Answer C. To help a student become aware of their own learning and make improvement. Question number 34. Which assessment type would you use to determine whether instructional strategy are effective meeting students needs? Answer है formative assessment. Question number 35. An assessment that involves student tracking their own progress and understanding their learning goal is called. Answer D. For assessment as learning. Assessment as learning माध्यम रे student तार निजे निजे को ट्रैक करि परिबो तार प्रोग्रेस को एवं अंडरस्टैंडिंग को लर्निंग रे. Question number 36. Which assessment method provides data for student to reflect on their own learning and identify area for improvement? Answer assessment as learning. Question number 36 एने पढुची. Which assessment method provides data केउ assessment माध्यम रे हम तथ्य पाइथौ स्टूडेंट मान पई जहाँ रिफ्लेक्ट करे on their own learning and identify areas for improvement. Answer assessment as learning. Question number 37. A pre-test given before a new unit begins to assess prior knowledge is an example of. Answer C. Diagnostic assessment. Question number 38. Which type of assessment is designed to help students self-regulate their learning and set goals? Answer D. Assessment as learning. Question number 39. The primary focus of assessment for learning is to. Amara assessment for learning रा primary focus कौन अटे? Answer C. Provide feedback to improve learning and guide future instruction. Question number 40. Which type of assessment typically involves setting learning goals and reflect on progress? Answer है D. Assessment as learning. Question number 41. Assessment that helps identify what students know and need to learn before instruction begin is called. टीचर माने जो आसेसमेंट यूज करती किसी नुआ टॉपिक आरंभ पूर्व जो स्टूडेंट्स कौन जानी से विषय और कौन आगक जानवा को चाहूँगी से आसेसमेंट कौन कहुए? आंसर बी. डायग्नोस्टिक आसेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच टाइप ऑफ आसेसमेंट इज फोकसेस ऑन फीडबैक दैट गाइड्स इमीडिएट इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस? आंसर फॉर्मेटिव आसेसमेंट. फॉर्मेटिव आसेसमेंट माध्यम आम स्टूडेंट मान फीडबैक दे पाइपर और इमीडिएट इंप्रूव ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस आनीपर. Question number 43. The use of rubrics and peer reviews to help students evaluate their own work is an example of. Answer D. Assessment as learning. Question number 44. Which assessment type is used to measure the effectiveness of learning at the end of a unit or course? Answer C. Summative assessment. Question number 45. A teacher conducts a regular review of a student's progress through informal checks and quiz. This is an example of गोटे रेगुलर बेसिस रे टीचर जनक आमर रिव्यू नौ स्टूडेंट मानकर कौन क्विज एंड चेक माध्यम क्यों प्रकार एग्जांपल अटे? आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 46. व्हिच असेसमेंट टाइप इज यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर लर्निंग प्रोग्रेस एंड एडजस्ट देयर लर्निंग स्ट्रेटजीज? आंसर है डी. असेसमेंट एज लर्निंग. Question number 47. Assessment that involves setting goals and reflecting on one's own progress throughout the learning process is an example of. Answer D. Assessment as learning. Question number 48. The primary purpose of assessment as learning is to. Our assessment as learning ro primary purpose कौन अटे? Answer C. Helps student monitor their own learning and make adjustment. Student their own learning पाई निज को monitor करिबा एवं adjustment करिबो. Question number 49. Which type of assessment involves giving students the opportunity to revise and improve their own based on feedback? क्यों प्रकार assessment इन्वॉल्व थाए? स्टूडेंट को दैथे opportunity to revise and improve their own based on feedback? आंसर है C. Formative assessment. Question number 50. शेष क्वेश्चन. Which type of assessment involves students reflecting on feedback and setting learning goals? क्यों प्रकार असेसमेंट इन्वॉल्व होता है? स्टूडेंट मान कौन प्रतिफलित स्टूडेंट मान प्रतिफलित होता है से निजे निजर फीडबैक नहीं पारे और निजर लर्निंग पे गोटे गोल सेट करेंगे. आंसर है असेसमेंट एज लर्निंग. तो स्टूडेंट्स ये आम सर 50 MCQ डिस्कसन असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग उपर.
जदि ये डिस्कसन तुमको भल लगी तेज भिडियो गोटे लाइक कर लिंक तुम शेयर कर तुम सांग सहित चैनल जो प्रथम थर पे तेज चैनल को सब्सक्राइब कर नियो। आ हाँ मो एग्जाम स्टडी लक्ष्य है तुम जिते सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्जाम पूर्व अति कम जिते जिते अधिक अति 15 ରୁ 20,000 25,000 MCQ तुम आगे डिस्कसन कर उपस्थापन कर तो जेहेतु समय अभाव रोचे प्रचुर समय मिल पार ना तो सबू MCQ आंसर मु बिट बाय बिट एनालिसिस करें किटा क्वेश्चन आंसर गोटे दुटा क्वेश्चन आंसर भूल आसी भूल डिस्कसन हो तुम पाखे आउ तुमको रिक्वेस्ट जदि से आंसर तुम जानीपार भिडियो शेष पर्यटन देखुच तो रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स माध्यम से क्वेश्चन को तुम मैंने मतलब कमेंट माध्यम जानत तो जहाँद्वारा मुझे क्वेश्चन को एनालिसिस कर तार सठिक आंसर तुम रखिपारि। रोची जय जगन्नाथ।